है ना, वो बीच में थोड़ा गैप आ रहा था, तो दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड द कैमरा. ठीक है, वो मजा नहीं आता क्लास देने का. ओके, सो लेट मी स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस. Sachin, your question is very, that logical. That is a question of most of the people. आपका सवाल ये है कि मैं ट्रैवल, पहला आपका सवाल ये है कि मैं ट्रैवल के अंदर नया हूं, आई एम डूइंग इट जस्ट आउट ऑफ माय पैशन. इज दैट गोइंग टू बेनिफिट मी और नॉट? इसमें मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? ठीक है, सबसे पहले आप इस बात को समझो, दिस इज एन इंडस्ट्री एंड वी आर इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हैं. ठीक है, अभी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है. द इंडस्ट्री जस्ट गेटिंग इवॉल्व्ड, राइट? All of us have a lot of time to make our company as a brand and create our own niche. हम सब के पास अभी 20 साल हैं करने के लिए. ठीक है, अभी तक इसके अंदर वो स्टेग्नेशन आने में अभी 20 साल लगेंगे कि हाँ, देयर आर बिग कंपनीज, दे वुड ओनली बी एबल टू मेक मनी एंड अदर मे नॉट बी एबल टू, हु आर जस्ट स्टार्टिंग इन. अभी वो सिचुएशन आने में इंडिया जैसी कंट्री में, ब्राजील जैसी कंट्री में, चाइना जैसी कंट्री में अभी 20 साल लगेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दैट इट इज definitely going to be beneficial if you are even starting now. Even those who would start after 5 years. आप में से many who are taking the certification just for the IATA recognition, you would take the certification and you may not even take IATA recognition. I know that because we are doing it for hundreds of people every quarter, right? So you have to understand that those who would not start, they would be repenting after 5 years, seeing youngsters, they started recently and they are doing wonders in that. Okay, so one thing is this. Second question was that you have taken the certification and you have to take IATA, and after taking IATA, would that be beneficial or not? See, you have to understand, you need IATA if you really want to issue tickets under your own name. In the beginning, many of you would feel that we are not getting very good fares. We are not getting a lot of support from the airlines, right? So what is the solution of that? There are two solutions of that. The first solution is that you go for IATA recognition and keep working regularly. You are consistent in your business, in your work, and you would be able to start getting the benefits down the line. After 1 year, 2 year, 3 years, slowly the airlines would recognize you and they would start giving you the benefits. Right? What is the second way? The second way is that you have excellent command on GDS. When you have excellent command on GDS, then you are able to, it is like someone who can read Hindi. I'm giving you an example. I can read Hindi and I can live my life. If I start reading English also, I can read many extra things and I can live a better life. So GDS is also like that. Someone who is working on a GDS for 10 days may feel that, okay, I know a bit of it. And someone who has worked on a GDS for 5 years would know 100 times better than someone who has worked only for, few months on GDS. So your command on GDS can definitely give you benefits from the very first day. From the very first day. You are new, no airline is giving you any support. Okay. There are no deals coming only specifically for you. Then it is the knowledge of the GDS which can give you benefit. As simple as that. When you start getting those benefits out of the GDS knowledge, then in future you can think of going for other things. Like you can, in future you can think of adding things and so on. So all those things you can think in later on. So that is what we try to teach. Just taking an IATA, there are many who are linked with us, who are just taking the certificate and they want IATA. You would take IATA, you have a lot of time in your hand. Keep exploring, keep exploring. That day you would be an expert, you would know everything about GDS. Let's say maybe in 2 years, maybe in 4 years, 5 years, depends on how much time you're putting on GDS, right? If you think that you want to understand most of it, we never say 100%, most of it, right? In 3.5 months also, no faculty can teach 100% of the GDS. GDS is endless, right? So that thing saves a lot of time. Most of the time, as per our own experience, we know that the training and the knowledge given in a 3.5 month course
that saves minimum 2 years of self-experience for most of the people, right? But I'm not saying that someone should do that only. You have time, you think you are doing, like I know some, that retired people, okay? Retired means that retired from service, right? From defense background and so on. If they have time, they're doing it just like you said, I'm doing it from a passion. If they're doing it only for as a hobby, maybe in 2, 3 years they would learn on their own, right? I hope this answers your question. If not, then please repeat your question. I'll answer once again. नहीं सर, आंसर तो ठीक है, मतलब बस मेरा मेन क्वेश्चन तो यही था क्योंकि मैं थोड़ा अंदर एक होता है मन के अंदर के बिल्कुल नया है, बिल्कुल करियर नया है, तो आउट ऑफ पैशन शुरू कर रहे हैं, तो बस वो चैलेंजेस के बारे में सोच के हो जाता है कि कैसे कैसे चैलेंज रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एजेंसीज इंडिया में या फिर पंजाब में, बेसिकली यहाँ से मैं हूँ, इस्टेब्लिश नहीं है, यहाँ पे अच्छी अच्छी ट्रैवल एजेंसीज हैं, तो उनको उनके साथ compete करना और चैलेंजेस जो होंगे तो उसके रिगार्डिंग ही था कि कैसा रहेगा। आपने कहा कि यहाँ पर अच्छी अच्छी ट्रैवल एजेंसीज हैं, ठीक है? आपने पंजाब का नाम लिया, ठीक है? पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिससे मैं भी काफी अच्छे से वाकिफ हूँ, राइट? ओके, तो क्या आप मेरे को कुछ नाम बता सकते हैं? सर ट्रैवल एजेंसी जैसे मेरे लोकल यहाँ एक ट्रैवल एजेंसी है, A1 ट्रैवल्स है, तो काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो, मेरे टिकटिंग में ही है वो, ओके, काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बाकी तो मतलब पंजाब में तो बाकी मतलब सब वैसे तो पता ही है कि पंजाब में ट्रैवल एजेंसीज का बिजनेस काफी अच्छा है, क्योंकि वो कनाडा की वजह से काफी ज्यादा पंजाब में बूम था। ओके, ओके। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, that if we have to count some top companies, right? Okay. Then there are 10 to 20 companies you people, all of you already know the name of, right? Akbar, Ria, and so on. Okay. In regard to air ticketing, I'm talking about specifically, right? The company which you are talking about, that is a company which is still not able to make their own B2B platform. They're still struggling for that, right? Major earning of the companies like this is of multi-sector airlines going to USA or going to North America, and they are reducing the fare out of it. Okay. For doing such kind of a practice, there is no need of any investment. One needs only IATA Go Light and the right knowledge on GDS. If you think they have 20 employees and they are doing a sale of 2 crore in a month, okay, being a single person, you would be able to do a sale of 20 lakh rupees without opening an office like that. This is the scope this air ticketing has. Okay. But obviously you should be doing it the right manner. Okay. I hope this answers your question. So there are a lot of companies, there is a lot of scope, and there are a good number of people who are earning happily and they are growing themselves as well. Okay. Usually airlines would start, even if you're doing a normal business, an average amount of a business, the airlines would start recognizing you and start giving you benefits after 2 years. For the 2 years, we have to rely on our own knowledge. हम अपनी नॉलेज के ऊपर रिलाय करेंगे, उसके बेसिस पे हम पैसे कमाएंगे, ठीक है? और अदरवाइज हम अपना टाइम नहीं वेस्ट होने देंगे। इतना तो मैं अपनी हर क्लास में सिखाता हूँ, ज्यादातर क्लासेस में समझाता हूँ स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं, कि भाई हाउ यू कैन recognize a right client and a wrong client, and you can save your time also, and most importantly you can save that you are not getting demotivated because of they are not getting converted, which is very important for anyone who's starting a business. This is something very important, right? Anything else anyone would like to ask? और कोई कुछ पूछना चाहे बोलिए प्लीज। जीडीएस का सर्टिफिकेट मैंडेटरी सर, वो बेसिक का हो गया है। बड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ पर सवाल है, पहले मैं हिंदी में इसका जवाब देता हूँ और फिर अगर कोई कहेगा तो मैं उसको इंग्लिश में भी जवाब दे दूंगा, ठीक है? कि हमारे पास जो जब हम आईटा अप्लाई करते हैं, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई फॉर द आईटा, तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट है
वो सर्टिफिकेट सिर्फ बेसिक चाहिए है या टिकटिंग का चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं हर क्लास में देता हूं, हमेशा हर महीने जब हम ये क्लास करते हैं इसका जवाब मैं देता हूं, ठीक है? फिर भी ये सवाल आता है, बड़ी अच्छी बात है आया। ये ऐसा है कि आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए कॉलेज को आईटा रिकॉग्निशन सेंटर, ठीक है, आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है? अब आप ये कह रहे हो कि मुझसे 10वीं मत करवाओ, मुझे सीधा 12वीं की मार्कशीट दे दो और फिर मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। तो जो जीडीएस बेसिक है ना, वो टिकटिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंडेटरी है। जीडीएस का सर्टिफिकेट आईटा नहीं मांग रहा, बेसिक का सर्टिफिकेट आईटा नहीं मांग रहा, ठीक है? बट जीडीएस का टिकटिंग का एग्जाम देने के लिए जीडीएस बेसिक का एग्जाम पास करना जरूरी है। मतलब आपने पहले 10वीं पास की तभी तो आप 12वीं दोगे। फिर आपने जब 12वीं पास की तो कॉलेज आपसे 10वीं की मार्कशीट नहीं मांगता, वो कहता अच्छा 12वीं की दे दो, आप 12वीं में पास हो इसका मतलब 10वीं में भी पास हो। So that is what it is. So let me repeat this thing in English also, that when IATA is saying you give me a ticketing certificate, you have to give a genuine certificate of ticketing which can be issued only and only by a GDS. जो सिर्फ एक GDS, which only a GDS can issue. GDS says I cannot issue your ticketing certificate till you do not have a GDS basic certificate. You have not passed, you have not understood the GDS basic. So that is why you need to take both. Got it? So anyone who has taken a GDS basic certificate right now and not going for a ticketing certificate, that GDS basic certificate is useful for you for 2 years. Within 2 years, if you say that you make me give a ticketing exam on the basis of your GDS basic certificate, we can make you give a ticketing exam. But it should not be older than 2 years. All of those students who did the course in, let's say, 2019-18, they also have genuine GDS basic certificates. But because their certificate are now older than more than 2 years, they are not eligible to give a ticketing exam. So what they have to do? What is the solution? The solution is very simple. Again give GDS basic, again give ticketing. As simple as that. But 2 years, validity of a certificate for 2 years is also more than enough. I hope this answers your question. I hope this answers everyone that what is the importance of the certificate, right? If you are a proprietor, sole proprietorship, single person company, then you can think of going with a single air ticketing certificate. If you are a partnership or a private limited, then you can go for a double certificate. You have no option. As per IATA, even if you are a sole proprietor, you should be putting 2 air ticketing certificate. But this is what we have experienced a lot already, that proprietors are able to use it only on the basis of single certificate. Also, they are able to get the recognition of IATA, right? Yes, Sachin, go ahead. What is the question? सर जो अमेडियस का सर्टिफिकेट मुझे मिला है वो बेसिक, जिसमें लिखा हुआ अमेडियस बेसिक फंक्शनैलिटी का है, तो इसमें मतलब कोई और भी सर्टिफिकेट आता है जो इससे एडवांस होता है? बिल्कुल, अमेडियस का भी आता है। आप, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। लेट मी आंसर दिस इन हिंदी फर्स्ट एंड देन आई, इफ समवन वुड से, आई आंसर इन इंग्लिश। अमेडियस का बेसिक सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है, आपको प्रॉपरली क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है? उसका कोई सैंपल पेपर नहीं है, ठीक है? फिर आप उसको पास करते हैं, राइट? गैलीलियो के बेसिक सर्टिफिकेट से 3 टाइम्स उसकी फीस है, ओके? सिमिलरली अमेडियस का टिकटिंग का सर्टिफिकेट भी लेने के लिए, उसको पास करने के लिए कम से कम 2 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कोई पास कर पाएगा। उसका भी कोई सैंपल पेपर नहीं है, ओके? So those who are doing complete course, they can get ticketing certificate also of Amadeus and basic also, right? In case of Galileo, जब हम Galileo करते हैं तो Galileo के अंदर थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि सैंपल पेपर के बेसिस पर भी स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। पढ़ाई तो आप सब लोग कर ही रहे हो, इतनी मेहनत तो आप लोग कर ही रहे हो, दिख रहा है, ठीक है? बट सैंपल पेपर के बेसिस पे पीपल आर एबल टू पास Galileo basic and then Galileo ticketing also. Like students have class exam today, जिन्हों का भी 3 बजे एग्जाम है, लॉग इन आ चुके हैं, ठीक है? आप में से कई हैं
जो अपने कुछ एग्जाम्स पास कर चुके हैं, ठीक है, जैसे राजेश कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है, इन्होंने एग्जाम दिया, आराम से पास हो गया, बेसिक का, आज टिकटिंग का है, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इजी। दोज हु थिंक दैट कि हम इतनी मेहनत करके अमेडियस नहीं पढ़ सकते, हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लें, तो उनके लिए गैलीलियो काम कर जाता है। जो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन्हों के लिए अमेडियस भी काम करता है, ठीक है। आज से कुछ महीने पहले तक अमेडियस वॉज नॉट गिविंग एंडोर्समेंट लेटर। जब हम आईटा के लिए अप्लाई करते हैं तो सर्टिफिकेट देने के बाद आईटा एंडोर्समेंट लेटर मांगता है। वो एंडोर्समेंट लेटर आप हमारे को भेजते हैं, ठीक है, मतलब वो रिक्वायर डिमांड जो आईटा की ईमेल आई है, उसमें साफ साफ दिखना चाहिए कि आईटा ने ईमेल भेजी है, आईटा की ईमेल आईडी, उनका टाइम, डेट, आपकी ईमेल आईडी नजर आनी चाहिए, वो आप हमारे को भेजते हैं, फिर हम आपको एंडोर्समेंट लेटर दे देते हैं, राइट। आज से कुछ महीने पहले तक अमेडियस एंडोर्समेंट लेटर नहीं देता था। नाउ वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग विद देम कि अमेडियस के अंदर भी एंडोर्समेंट लेटर मिलेगा, ठीक है। So one can go with Amadeus also, one can go with Galileo also. Let me say this thing very clearly. In case of Amadeus, only sample paper is not going to help you in passing it. ठीक है, और बताइए और सर जो अमेडियस का एग्जाम हुआ था, जैसे मेरा जो कोर्स था वो फुली एडवांस कोर्स था। सो उसके बाद वो एग्जाम हुआ था वो बेसिक एग्जाम था, मतलब उसके नेक्स्ट एग्जाम मुझे भी और देना पड़ेगा मतलब टिकटिंग के लिए। there is option 6, whereas you have taken option 5. So you are talking about the certificate, ticketing, Amadeus certificate comes in expert level, right? So that you have to take, you have to give exam, you can get the certificate. मतलब उसका कोई नेक्स्ट एग्जाम होगा मतलब। हाँ, बिल्कुल। Any other question anyone want to ask? सर मैं जैसे सचिन भाई बता रहे हैं उसी तरह से आई वाज कमिंग फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड। आई हैव नो आइडिया अबाउट द ट्रैवलिंग बिजनेस, सो आई जस्ट न्यू इन दिस बिजनेस। तो मेरा ये था कि हमारी एक मतलब लोकल वेबसाइट चल रही है, टिकट टू इंडिया काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरा विजन ये था कि एटोलो का सर्टिफिकेट लेके, आईआईटी का सर्टिफिकेट लेके, आई वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ वेबसाइट और उस पर ही पूरा काम करना है मुझे। मतलब लोग जैसे बिजनेस लेके बैठते हैं ना कि भाई टिकटिंग करना है, वो नहीं करना है, ऑनलाइन ही बिजनेस टोटली सेटअप करना है। तो वो बहुत हार्ड है या हो सकता है अगर? आपने तो जो पहली क्लास ली थी जी उसी के अंदर मैंने समझाया था कि आप ये एपीआई या इंटीग्रेशन आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। जी जी इसी में मैंने आपको अच्छी तरह से सारा दिखाया भी है, समझाया भी है, ठीक है। जी But obviously, just starting a business manually is faster, easier, uh-huh, and making everything get integrated and mhm, making it start working is going to take a little extra time for sure, right? But it is very easy. It is not difficult. It is not at all difficult. ठीक है, अगर आज मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस में लिख दूं, ठीक है, कॉल मी फॉर परचेजिंग एन एयर टिकट, आई गारंटी मेरे पास 500 लोगों की कॉल होगी और उसमें से 300 लोग सच में चाहते होंगे कि मैं उनकी टिकट इशू कर दूं, ठीक है। मेरे को कोई आइटा नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, और मैं सेल करना शुरू कर सकता हूं, राइट, सो फास्ट। बट व्हेन आई वांट कि कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और करे, तो उसको इंटीग्रेट करने में करीब 1.5-2 महीने लग जाते हैं, राइट, दैट इज इट, नथिंग एल्स। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इवन टेक्निकल थिंग्स आल्सो वी आर कवरिंग इन आवर क्लासेस व्हिच यू नो वेरी वेल, राइट। yeah, Eventually you have to implement it, though we would be covering many other things in future classes also as per the courses, right? बोलो खगेश, क्या सवाल है? सर जैसे सर हम हमारे पास गो लाइट आने के बाद, आईटा गो लाइट आने के बाद, तो बोलो। सर क्या तो सर क्या हम टिकटिंग इशू कर सकते हैं विदाउट कैपिंग? बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये आइटा लेने के बाद दिस इज अ ट्रबल एरिया, राइट। वी हैव टेकन आइटा, राइट, नाउ वी आर नॉट एबल टू इशू द टिकट। व्हाट आर द रीजंस? देयर आर मेजरली 3 reasons, okay. The reason 1,
person who has taken an IATA is not able to integrate it with EasyPay. वो इसको EasyPay से इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहा, उसके सिस्टम के ऊपर एयरलाइंस दिख रही हैं, वो टिकट बना पा रहा है पर इशू नहीं कर पा रहा। वो गैलीलियो को फोन करता है, गैलीलियो सपोर्ट नहीं करता, या जीडीएस को, मैं गैलीलियो की बात ना करूं तो ज्यादा अच्छा है बट ऑब्वियसली गैलीलियो या जीडीएस अमेडिया सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। हमारे को यूट्यूब पे कोई लिखता है तो हम यूट्यूब पे विशिंग यू ऑल सक्सेस लिख के कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं और इससे ज्यादा क्या करेंगे, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग इज पार्ट ऑफ द क्लासेस। When you are stuck, you are not able to connect your EasyPay, तो आप अपना टाइम फिक्स करो, अपने स्केड्यूल शीट में देखो, देयर इज अ लिंक कि हाँ आप डाउट क्लास अपनी फिक्स करें। आज तक कोई एक स्टूडेंट हो जो बोल दे कि उसने डाउट क्लास मांगी और हमने ना दी हो, चाहे प्राइवेट, ठीक है, या डाउट क्लास के कभी पैसे मांगे हो, ठीक है, एंड गेट इट फिक्स्ड। इवन व्हेन समवन इज अप्लाइंग फॉर आईटा, जब आईटा के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमसे लोग पूछते हैं कि क्या आप कर दोगे, हम कहते हैं हम आपको दिखा तो रहे हैं, आप कर लो खुद, ठीक है। अगर हमारा कोई अगर मुझे करना हो ना, या मैं अपने किसी स्टाफ से करवाऊं, तो 10 मिनट का काम है। सिखाने में और उन्होंने व्हाट्सएप में रिप्लाई करने में टोटल क्वालिटी टाइम 2-2, 3-3 घंटे भी चला जाता है। अगर फिर भी हमें लगता है कि कोई नहीं कर पा रहा तो हम लाइव लेके कर भी देते हैं। जब कह रहे हैं कि 100% होगा तो बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो वही आपको भी करना है। Wherever you are stuck, you are our student, ठीक है। आप बोलिए कि हाँ जी ये चीज नहीं हो रही है, हम करेंगे, ठीक है। जैसे भी होगा वो होगा तो जरूर। अगर कोई और ट्रैवल कंपनी कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो सर ये पॉसिबल है कि हम गोलाइट में भी आईटा इजी पे की मदद से विदाउट कैपिंग हम टिकट इशू कर अभी सकते हैं? एक मैंने बोला 3 कारण होते हैं इसके, ओके, एक कारण बताया आपने, ठीक है दूसरा कारण क्या है, ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि उनको अपना जीडीएस ही यूज करना नहीं आता। आईटा ले लिया, ठीक है, इजी पे भी चलो मान लिया, कर लिया, ठीक है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज देयर ओन जीडीएस, ठीक है। तीसरा कारण है कि एयरलाइन नहीं दिख रही है, एयरलाइन नहीं है। क्या कोई भी एयरलाइन नहीं है? अगर एयरलाइन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं। स्टैंडर्ड लेने से क्या एयरलाइन आ जाएंगी? तो भी नहीं आएंगी। जो एयरलाइन गो लाइट पे नहीं है तो क्या वो स्टैंडर्ड लेने से मिल रही है? तो भी नहीं मिल रही, ठीक है। तो क्या हमारे को कैपिंग ही लेनी पड़ेगी? हर केस के अंदर कैपिंग नहीं लेनी पड़ेगी। कई एयरलाइंस बिना कैपिंग के भी आपको टिकटिंग इशू दे रही हैं, सिर्फ उन्होंने राइट ईमेल पे या उन्होंने राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉग इन करना है, ठीक है। कई कैपिंग के लिए बोलेंगे, जो कैपिंग के लिए बोलेंगी उनको, अगर आप कैपिंग के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हों को इंपोर्टेंट एयरलाइंस की भी कैपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिलवाई है, ठीक है। तो जो एयरलाइन स्टैंडर्ड के अंदर भी कैपिंग बोल रही है तो वो गोलाइट के अंदर भी कैपिंग बोलेगी। तो कैपिंग का प्रोसेस अगर आपको लगता है करना है तो कैपिंग का प्रोसेस करवाएंगे, अदरवाइज उस एयरलाइन को छोड़ दो, बाकी जो एयरलाइंस है उनके थ्रू काम करना शुरू करो, ठीक है। जब आपने बाकी एयरलाइंस के थ्रू काम करना शुरू कर दिया, साथ में आप किसी ना किसी B2B के साथ भी कनेक्टेड हो, तो उनके लिए आप उस B2B को यूज कर लो, करोगे, टिकट अपने जीडीएस पे बनाओगे, यू वुड बी मेकिंग द टिकट ऑन योर ओन जीडीएस, राइट, ताकि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहे, बस आप इशू किसी और से करवा लोगे। इन दिस वे 100% कंट्रोल इज इन योर हैंड, किसी और के हाथ में नहीं है। आपको मालूम है कि उसके अंदर कैंसिलेशन क्या है, रीवैलिडेशन क्या है, कैंसिल खुद कर सकते हैं, हजारों चीजें आप खुद कर सकते हो। तो वो मेजर सबसे बड़ा बेनिफिट है जीडीएस का। तो उस केस में आप सिर्फ 200-300 रुपए लूज करके या मैक्सिमम 500 रुपए अपने प्रॉफिट से लूज करके टिकट इशू करवा लेते हैं। तो शुरुआत में ये सोचना कि जो एयरलाइन मुझे करनी है वो कैपिंग कह रही है, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो ऐसा नहीं है। आपके पास जीडीएस आ गया, आपके पास आईटा आ गया, टिकट इशू हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप नाउ इट आंसर्स, ठीक है। सॉल्यूशन है बिना कैपिंग के भी, ठीक है, क्लियर है। सर मैंने ना कुछ हफ्तों पहले ही मैंने गैलीलियो से कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने,
कि आप हमें महीने के इतने पीएनआर बना के दीजिए और आपको हम पर पीएनआर या पर सेक्टर पर सेगमेंट में इतनी कॉस्ट देंगे। तो पहले जो टिकट्स मैं ऑनलाइन बना रहा था मेक माई ट्रिप से या क्लियर ट्रिप से या इज माई ट्रिप से, जो छोटी टिकटें थी जैसे 10,000 की 15,000 की, वो अब मैंने जीडीएस में बनानी शुरू कर दी हैं। क्योंकि उनका कहना था कि अगर आपको कैपिंग भी चाहिए तो अगर आप एयरलाइन को अगर आपका नाम ही नहीं जा रहा तो आपको वो कैपिंग कैसे देंगे। तो ये आपको करने के बाद समझ में आया? ये हमारे 17 साल के स्टूडेंट्स को भी पता है। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप अगर यही सोचते रहोगे कि मैं कहीं और से 500 रुपए फालतू कमाने के चक्कर में या अपनी मेहनत बचाने के चक्कर में इशू करवा लेता हूं, मैं जीडीएस नहीं लेता, जीडीएस नहीं सीखता, तो आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल किसी और को ही मिल रहा है, आपको 500 रुपए मिल रहा है। ये बिल्कुल सर। इंडस्ट्री 500 रुपए के लिए नहीं है। दिस इज एन इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज इनोवा गाड़ी खरीदी, अब आप कल से उसको टैक्सी की तरह चलाना शुरू कर दोगे और आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, फिर 2 साल के बाद आप रुक जाओगे तो उसे बेच दोगे, कहीं नुकसान नहीं है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ उनके लिए है, जैसे सचिन ने भी पूछा, ठीक है, एंड निमेश वाज आल्सो हैविंग द सेम क्वेश्चन, ये उन्हीं के लिए है जो इस बिजनेस के अंदर रहना चाहते हैं। You have to build this business, then only it is going to benefit you. And we try to give you such knowledge also कि शुरुआत में भी आप नुकसान में ना जाओ, शुरुआत में भी आप मोटिवेटेड रहो। हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस ऑल्सो आंसर्स योर क्वेश्चन। सचिन, एनी मोर क्वेश्चंस? यहाँ पर मेरे स्टूडेंट बैठे हैं सामने, ऋषभ। ऋषभ का सवाल है कि कैपिंग क्या होती है, ठीक है। कैपिंग का मतलब ये है कि आपको एयरलाइन कह रही है कि भाई मैं आपको नहीं पहचानती। मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एयरलाइन इज सेइंग मैं आपको नहीं जानती, आपके पास आईटा है, जीडीएस है, सब ठीक है, पर आप मेरे को ये मेरे प्लेटफॉर्म पे प्रूव करो, ठीक है। जब आप इस बात को प्रूव करोगे, ये जो प्रूव करने का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में मैं एनालाइज कर लूंगी कि आप एक बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, मिड साइज कंपनी हो। अगर आप एक बिल्कुल छोटी कंपनी हो तो मैं आपसे पैसे भी मांग सकती हूं कैपिंग के। अगर आप मिड साइज कंपनी हो तो मैं आपको फ्री में दे सकती हूं कैपिंग। और अगर आप एक बड़ी कंपनी हो तो मैं आपको कैपिंग भी दूंगी और पीएलबी, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी दूंगी। समझे? तो उनको मैन्युअली बताना, उनके प्लेटफॉर्म पे उन्हों से कनेक्ट करके कि हाँ मैं एक ट्रैवल एजेंट हूं, मुझे काम करना आता है, ठीक है। और फिर अपना खुद का एक स्टॉक ले लेना, या अपनी एक क्या कहते हैं फिक्स ले लेना, फिक्स तो नहीं कहूंगा मैं इसको, कि हाँ आपको परमिशन मिल जाना कि आप इनकी टिकटें इशू कर सकते हैं। आपके सिस्टम के अंदर टिकट इशुएंस का राइट आ जाता है। इसको कैपिंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। बोलो सचिन, क्या सवाल है? सर कैपिंग से रिलेटेड रिलेटेड ही था कि अगर आईटा स्टैंडर्ड ले रहे हैं हाँ हाँ। और तो आईटा स्टैंडर्ड में कितनी एयरलाइंस हैं जो लेकिन मतलब आप उनसे तो कोर्स कर रहे हो, आप तो पूरा कोर्स कर रहे हो, है ना। इस क्या क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं या जो सिर्फ प्री रिकॉर्डेड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी फैकल्टी से बोलो, उन्हों के पास दोनों की लिस्ट है, ठीक है। आपकी क्लास का पार्ट है, उन्हें बोलो गो लाइट की भी लिस्ट दे दें और गो स्टैंडर्ड की भी लिस्ट दे दें, ठीक है। और दोनों में कोई बहुत ऊपर ज्यादा फर्क नहीं है, 10% का 20% का फर्क है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूं। जो भी ये सोच रहा है ना कि गो स्टैंडर्ड लेने से बहुत बढ़िया सारी एयरलाइन सलूट मारना शुरू कर देंगी, किसी ने सलूट नहीं मारना। ठीक है। आपने गो लाइट लेने में लाख 1.5 लाख रुपए लगे, गो स्टैंडर्ड लेने में 10-12 लाख रुपए लगे, हालत होगी वही। ये मैं पहले से बता रहा हूं, ठीक है। बोलो, और कोई सवाल है किसी का तो प्लीज पूछो। सर जो ये इंडस्ट्री है जैसे सर जीडीएस में है, जैसे हम सर जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे ही हमारा ब्रांड नेम बनेगा, वैसे वैसे ही हमारा मार्केट में जो ट्रस्ट है वो बनेगा। इसमें सर कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं है ना सर इस लाइन में। शॉर्टकट है, ओके। इसमें 2 शॉर्टकट है, ठीक है। एक, अ शॉर्टकट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय मनी,
ठीक है, आप पैसे डालो, शॉर्टकट ही शॉर्टकट है। ठीक है, और वो पैसा कहाँ डालना है वो प्रोसेस है उसका। ये मत सोचना, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम एयरलाइन पर पैसा देंगे तो शॉर्टकट है, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली हम उसकी पूरी डिटेल में अभी नहीं जा सकते। ओके, दूसरा शॉर्टकट क्या है? ठीक है, दूसरा और तीसरा, तीन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, दूसरा जो है वो सिंपल सा ये है कि आप एथिकल फेयर रिडक्शन करते हैं। आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे इस चीज को एनालाइज करने में और समझ लेने में कि कौन कौन सी एयरलाइंस के अंदर फेयर रिडक्शन होता है, या जो नॉर्मल अवेलेबल डील्स हैं जो ऑनलाइन लोगों को नहीं मिल सकती, ऑनलाइन सिस्टम्स उसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ये शॉर्टकट है। जो भी इस शॉर्टकट के ऊपर काम करेगा वो 6 महीने के अंदर महीने के 2 लाख 3 लाख तक पहुंच सकता है। ठीक है, अकेला। मैं जब बोल रहा हूं ना कि 2 लाख 3 लाख तक पहुंच सकता है, तो मैं बात करता हूं कि भाई आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई बोले कि मैं पूरी नहीं, मैं ये भी करूंगा, मैं 4 लोग भी हायर करूंगा, तो करो, बिल्कुल करो। ठीक है, और ज्यादा कमाई आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, अब मैं तीसरे पर आ जाता हूं। ठीक है, इसको अनएथिकल सेगमेंट ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, अनएथिकल सेगमेंट ब्रेकिंग कैन मेक यू अर्न 10 लाख रुपीज एवरी डे। That is a shortcut many people opt for. Like I wanted to say, but I didn't say. Now you have touched that emotion of mine. So let me tell you one thing. मैंने जब ये कोविड खत्म हुआ है तो हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने करोड़ के अंदर पैसे कमाए हैं, काम शुरू किया और टिकटिंग के अंदर करोड़ में कमाई की। ठीक है, और इवेंचुअली 2 साल के अंदर वो वाला आइटा बंद करना पड़ा, अब सीधे रास्ते पे आ गए। ठीक है, सो दैट इज समथिंग इज वेरी मच पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि वो वाला टाइम चला गया या अब वो वैसा लोग नहीं करते, ऐसा अभी भी करते हैं। जो इलीगल, जो अनएथिकल सेगमेंट ब्रेकिंग है उसको अभी भी एजेंसीज करती हैं। ठीक है, अगर वो उसके अंदर अपना हार्ट एंड सोल डाल देते हैं तो फिर वो दोबारा कंपनी नहीं खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि अपना हार्ट एंड सोल का मतलब अपना फेस डाल दिया आपने। ठीक है, फिर दोबारा आपका आइटा तो बंद होगा ही होगा। आपकी किस्मत अच्छी होगी कि आप 1 साल 2 साल खींच जाओ, हो सकता है 6 महीने में बंद हो जाए। ठीक है, उस 6 महीने में ही करोड़ों कमा लिए। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया है। नहीं कमा पाए आप करोड़ों, ठीक है, तो जितने भी कमाए वो ठीक है, नहीं तो बीच में नुकसान भी हुआ, बहुत कम होता है जो कि ठीक है। अब क्योंकि आपने हार्ट एंड सोल डाला था, आप दूसरी कंपनी खड़ी नहीं कर पाओगे, आप अपना नाम ही नहीं यूज कर पाओगे दूसरी कंपनी में। आइटा लेने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ आज किसी और के नाम से ले लिया, कल किसी और के नाम से ले लिया। समझे आप? तो ये वाला शॉर्टकट जितने भी ये यंगस्टर्स है ना, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं, मैं जानता हूं। जो बहुत, एक्चुअली मैं आपको ये भी बता दूं, बड़ा हार्ड वर्किंग काम है। रात रात भर जागते हैं। ठीक है, पहले फिगर आउट करते हैं कि कौन सी वाली एयरलाइन के अंदर हो रहा है, किसके अंदर $300 $500 बच रहे हैं, फिर उसी को सेल करते हैं, और जो खरीदता है उसको बेनिफिट होता है। कल को जो बंद लेते हैं वो ये लेते हैं। बंद क्यों होती है कंपनी? कंपनी बंद इसलिए होती है क्योंकि आपके पास पेनल्टी आती है हजारों डॉलर्स में, वो आप पे नहीं कर सकते, आइटा बंद हो जाता है, नहीं तो पे कर दो। मैं ऐसी कंपनीज को भी जानता हूं जो ब्रांड हैं, जिन्हों के नाम मैं 1000 बार लेता हूं, आप लोग सब जानते हो, उन्होंने करोड़ों में पेनल्टीज पे की है। वो भी करते हैं, कई बार कर लेते हैं गलती से, चलो भाई लालच आ गया, कर लिया, नहीं पता चलेगा। ठीक है, पर आपका काम इतना है कि आपके पास आपका 300 करोड़ की आपकी कमाई है, आपके पास पेनल्टी आई 400 करोड़, आप 40 करोड़ की, तो आपने पे कर दी, क्योंकि आपको मालूम है आइटा बंद हो गया तो जो बाकी पूरा का पूरा आपका B2B का बना हुआ है नेटवर्क, वो भी तो बंद हो जाएगा। आप किसी भी B2B से अगर कनेक्टेड हो, ठीक है, किसी का भी नाम लेना नहीं चाहिए, आप अगर किसी भी B2B से कनेक्टेड हो तो अपने आप को इस बात का जवाब देना
कि क्या कभी उस B2B ने आपको मैसेज भेजा कि इस अकाउंट में पैसे मत डाल? अगर ऐसा मैसेज आया है तो उन्होंने कोई एक अपना वर्टिकल बंद किया है, कोई एक अपनी कंपनी बंद की है। सर मोस्टली ना हमारे पंजाब में क्या है कि सर जैसे आपने बोला कि वो उनका आइटा बंद हो जाता है, वो नया आइटा किसी और के नाम पे ले लेते हैं, जो पेनल्टी होती है वो भर देते हैं। लेकिन सर उनका क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे रेगुलेशंस बढ़ रही हैं, तो धीरे धीरे उनका काम भी अब खत्म हो रहा है, जो कि पिछले जैसे इन्होंने बताया सचिन जी ने कि A1 वाले हैं, तो धीरे धीरे सर उनका काम, क्योंकि जो B2B में है जैसे अकबर है, रिया है, गई है, वो सर उनके अकाउंट ही वो बैन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो एथिकल में सर जैसे मैंने आज सर एक टिकटिंग बनाई थी सर, दिल्ली टू वो थी, I'm really sorry, my computer crashed, so the class stopped in between. I apologize for that. Yes, please. Any questions left? Anyone want to ask any question? There are majorly three things in this class which I'm going to cover today. One are your questions, anything related to IATA or a travel company, right? Second, the process of applying the IATA. And third is related to Hajj and Umrah, the updates which are there, that how to start your Hajj and Umrah business. Okay. So right now I am answering your questions, and then I would move to applying the IATA. That is, I'm going to cover 100% in English. Okay. So anyone who may not be able to understand in Hindi will be able to understand that process. Okay. And in the meantime, any questions, please go ahead. If there are no questions, then we can simply move to the process of applying IATA. No questions? सर जैसे सर मेरे पास, जैसे आपने बोला कि अभी आइटा की क्लास शुरू होगी अप्लाई की, तो सर जैसे अभी मुझे उसकी नहीं है जरूरत, तो अभी मैं क्लास लीव करूंगा सर कैसे? आप लीव करना चाहो बिल्कुल कर, आई हैव नो प्रॉब्लम इफ यू आर लीविंग द क्लास। ओके, क्योंकि सर वो क्लास तो कि मुझे अभी है ही है सर, मेरे पास तो है आइटा अभी, बिल्कुल। और अगर दोबारा सर जब अपनी कंपनी का नाम बता देना, मैं सबको बता दूंगा, आपसे टिकट इशू करवा लिया करेंगे। सर मेरी कंपनी का नाम है, नहीं नहीं सर वैसे मैं आपको सर एक बात बता देता हूँ क्लास में, कि सर जो मैंने आइटा अप्लाई किया था तो मार्केट में ना मेरे से बहुत पैसे मांग रहे थे वो, तो तब सर थोड़ी फाइनेंशियली भी थी प्रॉब्लम, लेकिन आपकी वीडियोस को देख के सर मैंने आइटा अप्लाई किया अपना, और बहुत ही कम कॉस्ट में हुआ वो। चलो गुड। अब और अब आप टॉप आइटा परफॉर्मर बन जाओगे, फिर हमें खुशी होगी। जरूर सर, थैंक यू, जरूर सर, जरूर सर, जरूर बन जाओगे। तो फिर सर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ सर, टुमारो मॉर्निंग? हाँ बिल्कुल, कल 11:15 बजे क्लास में आओ, बिल्कुल आओ। थैंक यू सर, थैंक यू। Any other question anyone want to ask? Dijan, Babu, if you have any questions, anything you want to ask in English, please go ahead. I'll answer you if you have any doubts. Yes, please go ahead. Unmute yourself and ask your questions. I do not have a question for now. You don't have any question right now? No. Okay. So what we are doing is, now I am going to start the process of applying the IATA from the very beginning. Okay. Like we used to show 1.5 years ago. Then we started, eliminating the part how to sign up and so on. Okay. Now this time, after a long, I would be starting the process from the very beginning, that how to sign up, and then understanding the requirement of the IATA, and then uploading the document. Okay. So that is what I would be covering now. Okay. Wherever, when I'm sharing the screen, sometimes the computer goes slow down. If my computer would crash, then again I'll start in 5-10 minutes. Okay. But I hope now it will not crash. Right. So when I am showing you all the process, if you get any question in between, do not hesitate in asking that. Okay. Don't think that I am going on and you should not be disturbing it. You should be disturbing it. If you have a question, you should be disturbing it. Right. Because these sessions are live, because so that we can answer you all
when we are in right rhythm of giving the answers, where we can show you the things. Afterwards, after teaching all of this, then giving again on WhatsApp, though we keep giving, but that can save a lot of time, right? That's what I'm trying to tell you. Okay, so the first thing is that we go on IATA.org, as it is mentioned on the tourism school's website also, that anything, don't trust the tourism school, don't trust Mayank, don't trust anyone, trust IATA. If you want to trust, go ahead and trust IATA, right? And for going to IATA.org, we can put IATA customer portal, or we can put IATA.org on our computer, on our browser, and we would be on that. Okay, it is as simple as that. So once we are on IATA.org, then it shows us the services. Under the services, it is very clearly visible that there is a travel agent recognition and there is an option of cargo recognition also. Okay. So the cargo recognition is something else. Cargo is something in which we send, goods in aircraft, right? Not human. Okay. So we are on IATA site right now. I hope everyone is able to see that. Here we have services. Okay. Here we can see services. So when we go on services, here we have travel agency program on top. Understand this. It means it is very important for them. Okay. Travel agent accreditation. There is travel industry designator service also, TIDS. Many hotels, they say you can give your TIDS number. Getting a TIDS number is not at all easy. Let me tell you that. Okay. So that is a question I can answer after showing you this process. If someone would have a question that what is TIDS, I'll explain you later on. But this is not a recognition, let me tell you very clearly. Okay. But this happens free of cost. Travel industry designator service, TIDS number, which is also given by IATA. This can happen free of cost. Okay. Then we come to travel agent accreditation. And here you can see it is telling us to apply for the accreditation. Okay, we need an email ID for that, which can be a Gmail email ID, Yahoo, Outlook, anything. Okay. Now they are telling you to, fill up your detail and so on. I can save my time of not filling it up and straight away going on IATA customer portal. So I'll open another platform, another tab, and I'll put IATA customer portal. Okay. So this shows us IATA login, right? After filling that detail, that would have also brought us here only. I have saved some time. I'm trying to check that which Gmail I am signed in with, right? I have multiple Gmail account because for doing all of this, we need multiple email ID. I think tourism school teaching. Yeah. Okay. So I'll go on sign up. Okay. There was login.
and there was sign up. I've clicked on sign up. So this is slow, not because of us or because of our internet. This is the site is slow. Okay. So in this, no one can do anything. So when we put a, like, everyone knows the process. Now we are waiting for their email to verify our account. Here it is, right? We will simply verify the account. This is something everyone knows how to do. All those who are doing it from the computer, they can do it side by side. Whatever I am doing, you may be able to do it a little faster. Maybe if you are in America or in Canada, where the internet speed is very high, where the sites take very less time in uploading. In the meantime, if anyone has any question, please go ahead. सर इसमें जो हमने पहले अप्लाई फॉर आईटा क्रेडिशन का जो ऑप्शन आई थी उसमें हमने फॉर्म फिल किया था और वो करने के बाद जब हम आईटा कस्टमर पोर्टल पे आके साइन अप कर रहे हैं तो दोनों में क्या ये डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है. There is no difference. That is the place where they are registering. They are just trying to take your detail, and eventually they would put you on that. तो हम उसको छोड़ के डायरेक्टली यहाँ पर आके भी हम साइन अप कर सकते हैं. यहाँ पर आके भी कर सकते हैं. Let me, because it is just taking our time. In the meantime, we can try that also. So let me show you. Like, just so if someone is doing from UK, so you can pick up UK here, right? If someone is doing from Africa, you can pick up Africa, Uruguay, whatever. Okay.
So on the basis of that only the system would show you everything later on. Okay. See, nothing has happened. Now it has given us the link of the customer portal. Now we are on the same platform where you have to sign up and you have to do the same process which we were already trying to do there. Okay. So here we can see a little progress. Now it is asking for our name. Now, whose name you are going to use? If you are a manager of a big travel agency, then you can use your own name, and later on you can put the name of your owners. Okay. Now, this is a little important. You have to understand that they are asking you, are you an airline, freight forwarder, or a travel agent? We are a travel agent. Okay. Don't think that you do not have an IATA, you are not a travel agent. You are a travel agent. Okay. We have to create the password. Now they are asking to complete your profile. We should complete the profile, but let me skip it right now. Okay. We can complete it later on also. Now, if we see here, we cannot see any button for IATA recognition. Okay.
So what we have to do, we have to go on see all, right? Now it will show us that what all services we can go for, right? I will click on available services. Now you are able to see IATA recognition and changes. Now a lot of people, they have a question. If we take IATA Go Light right now, and later on we want to change it to Go Standard or vice versa, how would we do that? You will come here only and you will click here only. Because this is not the button only for recognition, this is the button for changes also. Okay. So we click on request a service. So now it is telling us again that complete your profile. So now we have no option but to complete the profile. Okay. Now they are asking for the travel agency name. If by the same name in the same country there is already a travel agency, then it will show us and it will not take that name. Okay. So usually we all have unique names only. So I'll just put a normal name. I'm deliberately putting such a name so that it should not appear like we are misusing the system, and it is unique also. So it is saying no result found. Many of my students, they stop here only. They are not able to go further. This is a good news. No result found. It means by this name, there is no company. Okay. So we have to create the account now. Because on this company name, there is no account. So we are going to create the account. Now they are asking for the name. So website is optional, VAT is optional. At the place of VAT, if you want to put your GST number, you can put that. Or else we can simply leave it. Okay. Like it is optional and we are requesting to create an account. After creating this account, many times the system says no access. If the system says no access, we have no option. We have to log out and we have to try next day or after 2-3 hours. Let me tell you this thing very clearly. So never panic. If it is saying even right now, if it would say that no access, then we will not be able to complete the process. We would also need to leave it here only. Okay. So we'll continue. Now they have created a user. Now understand this. Maybe I am the owner of the company, right? And my partner is also equally involved. I may be going out of India. I may not be able to finish the process. So I can add another user or I can add my manager also here. Or my manager who is doing it can add me, right? So we both will be able to access this complete account. Okay. Right now, I'm not going for this. I would simply click this and I'll go to service. Okay. I'll go to service. If you are the one who is going to do everything, then there is no need of creating double user. Okay, that would only create a confusion for you, not for us. Now they are asking apply for a new head entity. That is where we have to click. We are applying for a new
IATA Recognition. So now it is already on travel agent. Those who want to go for cargo agent, they can click on cargo and they can start with that. We have the recorded sessions for that also available. Right now, it is by default showing us Go Standard. We can change it from here. We can go on Go Light or Go Standard, whichever you like to go for. Okay. You want to compare what is the difference in both. This is where the comparison is. We already have a PDF. I'm sure you already have that. Our PDF is far clear than this. Okay, that is far easier to understand. But let's see this. Go light, apply now, IATA Easy Pay. What is IATA Easy Pay? This is how you pay for the tickets. Okay, like I said that there are many people, they have IATA, but they are not able to make the payment. So because this is something they are not able to use it. If you are our student, you are not able to use it, let us know. We'll make you use it. Don't worry about that. Okay. Go Standard, remittance holding, cash. It means you have more options of making the payment, right? You don't have to pay instantly. Okay. Financial securities, yearly financial assessment. So your billing is going to happen through Go Standard itself. And in Go Global is not of any added benefit. It is only for those who have their offices in multiple countries, right? So here you can see the fees also. So this fees is also very well explained in the sheet which we have already given you in the PDF. And that is the same thing is mentioned here also. Application and registration fees 250 Swiss franc. This has increased. When you will get the invoice, you will get in USD. Okay. This has increased. Last month it was less and it is expected to increase more also, right? So here, if we go for IATA standard, then it is 1500, right? So this is something, there is no mention of any security amount because when you are taking it, there is no need of a security. In our PDF, security amount, everything is very clearly explained. Okay. But we can take IATA Go Standard without security amount also. We may not be able to use all the features for it, but we can take it. A lot of people, they think that we have to give a security amount. You have to give for keep using it completely. But IATA recognition of a Go Standard without security amount is possible. Okay, our students have taken it. Okay. Is this agency a general sales agent? Mostly this is the question you have to say no, because if you are not a owner of a small travel airline or some airline is not already associated with you, your answer is no. Okay. Associated means that you are kind of a partner of an airline. ट्रैवल एजेंट या कार्गो एजेंट इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं दोनों कर सकते हो अभी पहले आप ट्रैवल एजेंट का कर लो उसके बाद आप कार्गो एजेंट का भी कर लेना ठीक है दोनों कर सकते हो आप एक कंपनी ट्रैवल एजेंट भी हो सकती है कार्गो एजेंट भी हो सकती है ठीक है ओके सो नाउ they are showing us the documents. These documents also, if you see our PDF, are far better way explained. Okay. But as we have to listen from the horse mouth, so we can see here. Legal entity, which means a company, private limited and so on. You need notarized certificate of incorporation, article of memorandum, annual return reflecting current share. Annual return. So your company must have an annual return or your CA should be able to give you a provisional annual return at least. Okay. Valid passport and ID proof. So for everyone, for all these, this is all same. It is only the proprietorship which is easiest. Where they are asking for your ID proof, that is it. Which can be your passport. Or which can be your government's issued ID proof. Okay. After that, what is the mandatory document? GST. You have to give the proof of GST registration. We had selected India. It is showing us for India. If you want to see for UK, we will select UK.
then it will show us for UK. Okay. So you can come on this stage and you can see what is required for UK. Okay. This is required. This is mandatory, right? Any one of the following? Trade registration, anyone. You can give shop establishment certificate, which is available online free of cost. It's a matter of 2 minutes. 2 minutes, you go online, apply it, download it, free of cost. Far better than MSME registration. Far better than MSME registration. Let me tell you this very clearly. Far better than Udyog Aadhaar card. Okay. Or you can give PF document from commissioners of office, right? Or tax registration or a sales tax registration. Okay. Or Udyog Aadhaar card registration, right? Any one of the following. Now we comes to the most complicated question. How many certificates are required? It is clearly saying 2. It is not saying that you are proprietor, you can give 1. It is what we are saying on our experience that our students have taken on the basis of 1, right? So if we don't tell you, then you would have no option but to pay us and pay, accordingly and taking 2 certificates, right? So personal certificate, if there is a requirement of English translation, usually which is not the case in case of India and most of the countries now, travel agent handbook which they are giving you, which we have to sign, right? So this I am just opening it on a next tab, okay? And we go next, which means we have already understood what all documents are required, right? Now, this is the real application form. Please understand. This is the real application form. This application form will get downloaded in PDF once it is done, and that also we have to send it to IATA. Lot of my students, they keep asking, where is the application form? We didn't get the application form. You all have filled up the application form and it will get downloaded in the PDF. Okay, we'll see this. Okay. Now the name is already given there. Trade name, we had put a trade name. Okay. Travel teaching agent. Office number, same number I will be putting everywhere. It will not take, it will take only landline there. So even if you put a wrong number here, they are hardly, though we should not do it, because if some, some penalty will come, then they will call. Otherwise, for the recognition, they are never going to call you on your landline or even on your mobile. They are hardly bothered to call anyone. You would only need to follow up. Now they are asking for the official email, office email. So again, same email ID. Website is optional. Service tax, this is where you can put GST number. Okay. AA0099. Okay. This is our GST number. So I put that. Address we had put. So it has already put here. Okay. Now specify legal status. So if we are a private limited, we'll mention here that we are private limited. Okay. If we are an association, we'll mention here joint venture. We can mention a limited company, limited company, limited Tata consultancy. Okay. Partnership. Okay. Sole proprietorship. So sole proprietorship is used by many people. Okay. State-owned enterprise, trust company. So let me take limited company, private limited or LLB. So all falls in that. This is more difficult. So that is why I'm taking limited. Now they're asking for the legally registered name. So once you have registered even proprietorship or partnership, that is your legally registered name. Okay. So here again,
You can mention travel packages, MICE, corporate, whatever you want to mention. Okay. Now this is where a lot of people make mistake. Okay. Again, we have an option of adding more people, more user here, though there is no need of that. Okay, not mandatory. Okay. This is where we cannot tick. So we have to first tick this portal admin, then we have to go on edit. Go on edit, another form pops up. Okay. Now you are able to see. So a lot of people, they are not able to open this form. And then they think, oh, we are stuck. Okay. So I am, because we have taken private limited, so I'll click director also, shareholder also, obviously, right? Salutation, Mr. or Miss, whatsoever it is, right? Street address, the Delhi, country, yeah. How many travel agencies previously worked for? So this is where, this is how there's limitize use of your certificate. If the same certificate is getting used in some other company also, you would mention here. You would mention here, they will not approve it. If you will not mention it, you would just upload that certificate and those are used in some other company also. It will mismatch. So right now we are putting, because this is the truth, we are putting none. Okay, in most of your cases, it is, this is what the truth is. Financial interest, how much financial interest I have in that? Obviously, I have 100% financial interest. Okay. Percentage of time devoted on travel agency, 100. Okay. Now, a lot of people, they have a question that how old should be our travel agency? Okay. So they are simply asking the same thing, that how old is your travel agency? And here I am putting today's date. Today is 12th of June 2025. I put that date. Okay. So new companies are also able to take IATA Go Light. And even our students, completely new company, have taken IATA Go Standard also. Okay. Job title, director. Though I mentioned a manager earlier, now I become director. So these are the mistakes. Okay. But I'll let it go because it will not be able to catch this mistake. Now we submit it. Now our form is complete. Okay. Now it is asking us, would you like to use credit card payment? If you are taking, if you are not opening a travel agency online based right away, the best answer is no. If you say yes, like Nimesh has, want to open something like this. If you say yes, then because you are going to do an online travel company, you would integrate online payment system also. So that company which will give you online payment system, that company will give you PCI DSS certification free of cost. When anyone would say yes, lot of my students, lot of IATA seekers, they would say yes, they are going to do manually and then they are not able to get PCI DSS and then they pay lakhs of rupees or thousands of rupees for PCI DSS. Right? Simply say no, as simple as that. Okay. Date when you opened the office, 12 June. Today only we have opened.
License number of the agency AA0099, right? Date of license granted 12 June. Everything we completed on 12 June. Okay. Trade Sir, registration so later on, sorry, sir, can we later on, can we add that things? The credit card one? Yes, yes, yes. You can anytime make the changes. Okay. Okay. Sir, how to know the license number of the agency, or we can do randomly? This is not the license number. This is the GST number. In license number and trade registration number in both. GST number. In both. Yes. Okay. GST Okay. number. Thank you. Is your agency an IATA registered cargo agent also? Like Lalit asked, can I become a travel agent also and cargo agent also? Yes. If you are already a cargo agent, say yes, I am already a cargo agent. Okay. So here we do no. I-10, it is used in USA. So we say no. If you are in USA, doing in USA, then you can say yes. Okay. Now they are asking that what all GDS you would be using. You can simply answer, take any one out of it. These are the GDS which are there. Okay. You want to say only Amadeus, you can mention only Amadeus. You want to say all, you can say all. You have certificates of Galileo, you pick up Amadeus here, no problem. You have certificate of Amadeus, you pick up Galileo here, no issue. Okay. So it makes hardly any difference. Okay. If we don't have any certification, and in the future we will we look for it, then You have to pick at least one here. okay. Okay. Irrespective of you would use it or not use it. They are not Okay. bothered even with that. But you have to pick at least one here. Okay. Okay. Thank So this is where we completed it and we go on next. Now they are telling us the mistakes. Previously defaulted, please enter a value where we have made a mistake. So this is where, okay. Any person who is director of who holds a material financial interest or position, so we say no to it. Okay. So our form is accepted by the system. Okay. Now they are asking us upload the files. Now start uploading the files. Okay. So if we are a private limited or something like this, we will upload the files here. So which means the documents which they are asking, your GST number and so on, whatsoever you want to upload, you would upload here. I am just, dodging the system. I'm just uploading a PDF, right? So that we can go on the last stage. Okay. Now they are asking upload your GST. Again, I will just put up any file. You have to put the right file. Even if you would put a wrong file by mistake, there is no problem in that. You would have an ample opportunities to recorrect it. Okay. So here we would be putting our shop establishment or something like that.
Now here we have to upload our certificates, right? If you are a proprietorship, just upload one. If you are private limited or anything else, upload two. Okay. This will be a very heavy file. Okay, now you are able to see, click here for endorsement letter sample. When you need endorsement letter from us, you don't have to send us this sample. Okay. You would need to send us the email which you would receive in your inbox from IATA. That share your endorsement letter. We need that email timing, email ID, everything. Don't send us sample. We know the sample. And we don't even give as per their sample. We give in our own sample. Okay. In our own format. And they always accept. So, sir, when we get the email for endorsement, they're asking to. We are submitting it right away. When we do next, if everything is fine, our application is submitted. If everything we have put attached correctly, they would send you an email, give us the endorsement letter of the certificate. Within 3 to 5 days, you would have that email. And then we are going to take 5 to 10 days in giving you endorsement letter. Okay. Don't think that you have got, they will give you a time limit that give us in 10 days, 5 days, 3 days. Don't worry about that time limit. Even if that time limit is crossed, we can do it again. There is no loss. There is no money involved in that. But we are going to take time in that. Sometimes we are able to do it in 2 days, 3 days. Sometimes we also take 10 days. Okay. So because why we take 10 days? Because you are not giving us the documents properly. Because you are not giving us the detail properly. Right. There are more than 30-40 students every month who are going for this process. Right. We may not remember you, just by a new number you are reaching us. Many times students, they reach us by a new number. Oh, give me endorsement letter. So we may, and then even after teaching all of this, 90% of the students, they make mistake. They don't give the documents properly for endorsement letter. And then it wastes times of everyone. Yes, Sachin, what is the question? तो जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिला था, सर्टिफिकेट के साथ एक लेटर भी दिया गया था टूरिज्म स्कूल की तरफ से, तो इन दोनों को एक फाइल में अटैच करके अपलोड करना है या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करना है? दोनों को अटैच करके एक फाइल में एक कंबाइन करके अपलोड करना है? कंबाइन करेगा. Now they are showing us the form which we had filled. Now they are giving us a chance to edit it. Okay. If there is anything we must go through it. We should edit it. Otherwise, we'll simply accept it and we'll submit to IATA. IATA is not asking for any money. See how honest this company is. If they ask you for $200 right away, you will give. Everyone will give $200. But they are not asking for any money. They will see your document. They would find out if it is correct. If it is not correct, they would tell you, correct it. When it is all corrected, then they will ask you for the money. Right? So doing this process is no harm. Anyone who is thinking that I would apply for IATA after 3 months, do this process. Right? Now, I told you the form will get downloaded. So this is where the form is. We have to download it. We have to download it. They would tell you later on that email us your form. Send us by courier to Singapore address or to Canada address. So this is where the application form is. Just keep it, save it. Right? So we have completed the process. Okay, let us see what is the status now of our process. Sir, how much money asking, like once the application is successfully done? We have already gone through it. I made you see that where there was a comparison. It was mentioned there. So when you go live, approximately it is $600 US. Okay, some amount of it can be reduced.
Okay, when the invoice will come, then get in touch with us. We'll tell you what can be reduced, how much, right? How to get it reduced. In case of Go Standard, that comes out to be approximately $2,000, right? And in case of Go Global, it comes out to be approximately $35,000 or $34,000 US dollars. Okay, which is mentioned in your PDF. If you see, even when you were not our student, you got a PDF that all is clearly mentioned on that. Okay. Now we'll simply go at home. We go on. We go on customer portal. We are just logging in, right? So we are already logged in. We had not logged out. So it is showing us our portal, our dashboard now, right? And here we can see that what we have done. Okay. See, this is our case number. We have successfully registered for it, right? So here, if you see, what is the meaning of open? They are teaching, na? They are showing that how to use the system. But this will not get finished. It will not show us. Okay. So this is your custom. Open means your work is done. Okay. And they are seeing it. It means they have received it. As simple as that. Okay. So new head entity. You want to see your application, you can see your application. By when you did it, by when you will get the response, that is also sometime they mention. New head entity, see full detail, you want to see your document, you want to, check all of that, you can do that. But we have completed our work. Now there is nothing else required. We have to wait for 2-3 days. Okay. If it is Friday, you have to wait for 5 days. And the same confirmation is here that you have successfully completed the process to apply for IATA recognition. Right? It is as easy that as it is shown. It is very easy. It's not difficult. Right. Any questions anyone like to ask? One question. बोलिए खालिद साहब बोलिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा Regarding the credit card thing, will be able to get the credit card payment even though we सर आप मजे से क्रेडिट कार्ड पेमेंट लो जैसे अभी तक लेते हुए आ रहे ठीक है सिर्फ दिक्कत वह तब है जब आप अपने क्लाइंट को कह रहे हो कि मेरी वेबसाइट पे जाओ वहीं पर ही क्रेडिट कार्ड से पे करो वहां वो जब आपको इनेबल करना है तब आपके पास पीसीआई डीएसएस चाहिए ठीक है और वो इनेबल करने से पहले आप पेमेंट गेटवे लोगे जब आप पेमेंट गेटवे लोगे वो साथ में मिलेगा पीसीआई डीएसएस बिना पीसीआई डीएसएस के पेमेंट गेटवे मिलेगा ही नहीं ठीक है सर
Any more questions anyone want to ask? Yes, I have a question. Please. For example, when you apply, for example, in the UK, and then you get your IATA, can you use it for example, for the US if you have another travel agency there, or you have to apply for a new IATA? Now let me give you answer of this in two different ways. Okay. I am a travel agent who is living in USA. Okay. Who applied for the IATA in India, got IATA recognition, now has the rights to issue the air ticket. I am still located in USA. Using that, I am issuing tickets, unlimited tickets. Okay. There is no problem in that. Okay. I can keep issuing tickets while being anywhere in the world. I took IATA from India. Wherever I am located, I can do that. Okay. Now, the second way to look at it, right? If you want to tell the companies in America that my IATA recognition is based out of America, then you need to take IATA recognition in America. You understand? When you issue a ticket, would your client get to know that your IATA is India based? Clients will not get to know, but the travel agents can get to know. Those who know what the GDS is, they would get to know. गया खत्म नहीं नहीं लग तो ऐसे है okay so I hope it is clear. I hope your question is answered. Yes, it is. Thank you. Any more questions anyone has? सर आईटा के बिना जीडीएस पे टिकट इश्यू कर सकते हैं? इसके भी दो जवाब है. अब अगर कोई व्हाट्सएप पे मुझसे पूछेगा तो मैं कभी मेरे मेरे उस पर डिपेंड करता है मूड पर भी. विच इज वेरी रॉन्ग. वी हैव टू बी प्रोफेशनल. तो आप बोलोगे यस गो हेड ऑल दी बेस्ट. ठीक है. Otherwise, you can say no also. But both the answers are correct. Let me tell you this. You don't have IATA. Okay. Let me tell you the difference in two type of travel agents. Okay. There is a travel agent who has IATA recognition. Okay. But has no knowledge of GDS. Right. That travel agent may not be able to issue the air ticket because of not having the GDS knowledge, not able to make the proper air ticket, right? Whereas there is a travel agent who has 100% command on GDS but no IATA. This agent is able to figure out the tickets which are worth 70,000 online in 55,000. He is making the ticket on system, but getting it issued by some IATA company by paying 1,000 rupees per ticket or 500 rupees per ticket. You have to ES the PNR to any IATA company, right? That decorative IATA agency which spent 1 lakh rupees, 2 lakh rupees in taking IATA, they look for such people. Oh, you know GDS, मुझसे issue करवा लो, get it issued from me, because they themselves are not able to issue. Now you got the answer. If I have command on GDS, I am far better than those who are having IATA but no command on GDS. Let me tell you this thing. Many people, they think we would be able to manage GDS on the basis of our employees. Your employees will take away your 50% profit, 100%, guaranteed. Your employee will not be able to find out the better fare on your system and will tell your client, sir, मुझे शाम को phone करना है ना, call me at 7 p.m. I'll give you a better fare. And then you would see after 2 years, your employee started a new travel company. That company is doing better and you are still struggling. I hope this answers your question. Any more questions?
So I would like to conclude it here, saying bye to all those who wanted to learn and understand only this. And those who want to understand about Hajj and Umrah, they can stay in the class. Those who do not want to understand, they can leave it. I have no problem. Okay. Those who have exam at 3 p.m., they want to leave at 3 p.m., you can leave at 3 p.m. You want to leave at 3:30 p.m., you can leave at 3:30 p.m. also, because you will be given 2 hours for giving exam, and you may be able to finish the exam in only 10-20 minutes. Okay. Rajesh sir can tell us that how long it takes to complete the exam. Rajesh sir, कितना time लगा था exam देने में? You have to unmute yourself if you like to answer. I think he is not able to unmute. Okay. Yes, sir. half an hour or so. Half an hour. So 2 hours, you need half an hour, right? So there is no problem in that. Okay. Yes, Sachin, go ahead. What is your question? पहले स्टार्टिंग में आपने टीआईडीएस के रिगार्डिंग भी बात कर रहे थे, जो मेनली होटल्स के लिए होता है ना? No, it is not necessary that it can be used only with the hotels. It can be used with other suppliers or big bodies of travel who can give you benefit. Now, what is TIDS? Let me make you understand. I am Hotel Hilton. Okay. I am telling you, you want lowest cost, you want a better cost of my hotels. Give me either an IATA number or give me a TIDS number. Okay. Give me a TIDS number. So you go on IATA portal and you would start applying for the TIDS like we did now. You all can try. Go ahead. When you would go ahead and apply for it, you would see there is a requirement which says you need to provide a recommendation letter. Right? Recommendation letter. Now you are our student. You would tell me that why don't you give me a recommendation letter? You are a student. You have all the rights to ask. I am a teacher. I have all the rights to ask. Why don't you give me a recommendation letter? Put yourself in my shoes. Being a teacher, being at a platform which can never run away, having reputation, I am asking, give me a recommendation letter. You have given me a recommendation letter. On the basis of that, I'll get TIDS. I'll do misuse of it. You will pay the penalty. Would you give me recommendation letter? Answer it to yourself. So no one is going to give anyone a recommendation letter. Who gives them? Then why this process is? This process is because you are running a travel company in India which is IATA recognized. Now your brother is running a company in Istanbul. He is not interested in taking an IATA. You would give your brother a recommendation letter. So we give recommendation letter for our sub branches where we know that they will not misuse it. They are part of our company. They are the company, right? Where we don't know how would they use it. No one is going to give recommendation letter. I hope this answers your question. Sir, what are the benefit of this? Like if someone give the recommendation, so what I can use for that? Some hotels would give you a better cost. Some airlines may also consider you. So as a salesperson, how I can get this without without asking the other person to give you the recommendations? What actually I have to? You have to convince some big airline on the basis of your business. I am your business partner. I have given you thousands of air tickets. Give me a recommendation letter. Even then airline will not give you. Or you convince a big travel company, IATA company. You know, they are in this class like Khagesh. Khagesh was saying I am IATA. You ask him, Khagesh ji, give us a recommendation letter. He will never give. You will never give. A hotel, a 5-star hotel can give you a recommendation letter. An airline can give you a recommendation letter. Okay.
Any IATA recognized body can give you a recommendation letter. And GDS, Galileo, Sabre, they can give you recommendation letter. But they never gives. Let me tell you. A hotel will give to a hotel. When I am taking a franchise of a Marriott, then Marriott will give me, because they know my crores of rupees are there with them for bank guarantee, for the guarantee of our association. I would never misuse it. So such kind of surety is required. Right? Okay, so here I hope I have answered most of the questions related to air ticketing, travel, IATA. And let's come to, this will not take much time, 5-10 minutes maximum, because I'm just sharing the updates. Okay. Hajj was going on, right? So when the Hajj is going on, then most of the time we are not able to, that go for a Umrah. That is the period, Umrah. A lot of people who are following Islam, they know about it. What is Hajj and what is Umrah? Both are pilgrimage. Hajj happens at a particular specific time, and Umrah happens throughout the year. When the Hajj is not happening, then we are going to see Kaaba Sharif and so on. So that is called Umrah, right? So when we are going for, when we want to start this as a business, okay, we do not want something, we are not asking for something for our own use. We are asking for something that we want to go for our, we want to sell it and want to earn money, right? So when we want to sell it, the trouble area comes where we are applying for the visa. Okay. Now, a lot of people, they, new update is that Nusuk, which is part of their government only. This is the platform that has become the official sole global distributions company for visas. Okay. So anyone who want Saudi Arabia visa, that company will first register themselves with Nusuk. Okay. When those companies are registered with Nusuk, those are going to be Saudi Arabian companies. Those cannot be Indian or the companies, in Europe and so on. There can be some exceptions for GCC countries. Okay. But India, Pakistan is not part of that. Bangladesh, so on, are not part of that. Okay. So, Saudi Arabian companies who want to sell their visas to other people for Hajj, Umrah or so on, they would first register themselves to Nusuk. Then they are authorized to make external agents. When you want a visa, you can take it from them. Right? Now, which are these companies with whom you can register as an external agent? I am showing you the official list of these companies. There is not one, there are many. Okay. So you have to see with which company you want to become an external agent. So this is the list. This link you can take from me. Write me a WhatsApp just after finishing the class. I'll send you this link. Okay. 2025, right? The list of the authorized service providers. So this is the list, right? There are more companies also, right? Let me tell you one which is having a B2B portal and everything. You simply go on that, register for it, and they are ready to make you an agent. That is Umrah Me. That is called Umrah Me. Let me open it here. So this is the company, Umrah Me, right? So you can register on that. Okay. Now let me tell you, Tashir. Tashir is also a company which can process your visa, but when we go on the website of Tashir, we have, I think it's not visible to you. Let me try to show. What I want to show is not visible. Just give me a second. क्या दिखाई दे रहा है वहां पर?
I'll show you. In the meantime, let me explain you also that when you tell any of this company that you want to be their partner as a B2B partner, they would ask for your IATA recognition. They are not going to make you a partner till you are not having an IATA recognition. Okay, that is why Hajj, Umrah, all of this is connected with IATA. Okay, so all of these Saudi companies, where you can, this is the company, okay, where you can go. And other than that, we can go on Tashir, okay, which I have shown in many classes. That is again has opened up. They had stopped because of the Hajj. They again has started the tourist visa. Okay. On tourist visa, people are allowed to do Umrah. Okay. So once you are linked with any of this company, you are IATA, and in India you want to do a Umrah business, this is enough. You don't need any further registrations or so on. But if you want to do Hajj, you want license to call yourself a licensed Hajj agent, then there is an additional process. That process also needs IATA recognition. And then we need to apply with the Ministry of Minorities, right? And it takes little time, right? There is a fees of 25,000 rupees. There are a lot of documents involved in that, linked with your company, your office, and so on. Like travel company, we can run from our own home, but we cannot run licensed Hajj travel agency from home. There has to be a commercial property, right? So this is the update. There is nothing much difference in that, right? This is something I have explained in many other classes also. So I hope the things linked with even Hajj and Umrah are answered. If it is not, then please ask your questions. Any questions? Bolliye please. देखो इतना बढ़िया सवाल पूछा है थोड़ा, ठीक है? सवाल ऐसे ही होना चाहिए. आईटा ले लेंगे तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे? पहले तो आईटा ही पैसे ले लेगा. आईटा लेंगे किस लिए? पूरी रामायण तो आपने सुन ली. जब टिकट बेचोगे तो पैसे ही तो कमाओगे. कोई कमीशन वमीशन नहीं है. जीडीएस को सीख के आप फेयर को थोड़ा बहुत कम करोगे, ठीक है, और पैसे कमाओगे. अगर आप फेयर कम नहीं कर पा रहे हो तो सर्विस चार्ज लगाओगे कि भाई ऐसा है, मैं टिकट इशू कर दूंगा, 1000 रुपए लूंगा. और मैं आपको बता दूं, लोग 1000 रुपए देना शुरू कर देंगे. Let me tell you, there is such kind of a demand in the industry that when you are selling air tickets, try to buy an air ticket. Then you would understand that the companies which are selling the air ticket, they don't even talk properly. And if someone is talking, making changes and giving you what you want and asking for 2000 rupees per ticket, you will give happily. But if you know GDS, without putting a service charge, you can still make money. Okay? Commission and PLB, that is a later stage. Don't think that Amadeus is going to give you commission. Amadeus gets commission when you issue a ticket using Amadeus. When you use Amadeus, then they get money. When you use Amadeus here and you practice it, they get money. Do you know? On the numbers of the PNR our students creates, we pay on the basis of that also. Why half a day Amadeus is not working? Because that half a day, there is a team which is deleting those PNRs. Right? So Amadeus is only there to earn. Okay, they are not going to give you any money. You have to earn money for yourself. Okay. Any more questions? Okay, then I really appreciate your dedication, sitting for 2 hours and listening to stories, maybe. But I hope it was beneficial to everyone, right?
You all are sitting, I am standing. Okay, so it's fine. Okay. So yes, Parasara, you still have a question. Please go ahead. You wanted to say something. लोवेस्ट का फ्लाइट जैसे इंडिगो वगैरह एमएडीएस पे नहीं बताती है सर, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आकाश एयरलाइंस वगैरह जो हमारे डायरेक्ट अहमदाबाद से डायरेक्ट वही एयरलाइंस जाती है दो, इसी को ही गैपिंग कहते हैं। जो नहीं बताती है उसको ऐड किया जा सकता है। अगर ऐड नहीं हो रही है तो फिर कोई चारा नहीं है, सीधा वेबसाइट से जाके करो एयरलाइन की, या फिर B2B के थ्रू करो। ठीक है, जब आपका वॉल्यूम ठीक ठाक होगा, जो एयरलाइन आपको GDS पे नहीं दिख रही वो भी दिखाई जा सकती है, वो भी डाली जा सकती है, बट यू हैव टू रीच टू अ लेवल फॉर दैट। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? सर हज और उम्रा का जो सर्विसेज है, अगर उसे ऑनलाइन पोर्टल पे ऐड करना हो या सेपरेट उसको एक अलग ही वेबसाइट पे ऐड करना हो तो वो पॉसिबिलिटी है? और उसमें क्या The site which I have made you see, they have everything of Umrah on portal. When you are registered with a recognized agent of Saudi Arabia, they will give you an online login. You would be applying the visa. They are not going to do anything. They will give you the access. You would be doing everything. So everything you can do that, and you can put it on your own system also. That is very much possible, right? Yes. Just give me a second. Any more questions from the online students? वेबसाइट सर वो 1 साल वाली परचेस करनी चाहिए या फिर फ्री वाली? वेबसाइट परचेज करनी चाहिए 10 साल वाली। ठीक है, अगर सच में ही इस काम में रहना है। ओके, 1 साल वाली कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर लग रहा है कि ट्राई करना है तो कम से कम 3 साल वाली। 1 साल वाली तो आपको तंग कर देगी। 1 साल के बाद उसके पैसे बढ़ जाएंगे, आप उसको रिन्यू करने के लिए 10 बार सोचोगे कि ये क्या हुआ। ठीक है, और सिर्फ डोमेन नहीं खरीदा जाता आजकल, सिर्फ डोमेन नहीं खरीदना है आपको, उसके अलावा भी अपना स्पेस लेना है। ठीक है, होस्टिंग लेनी है अपनी खुद की। डोमेन तो वो बेच ही रहे हैं। वो क्यों बेच रहे हैं डोमेन? वो इसलिए बेच रहे हैं कि एक बार डोमेन तो खरीदो, एक बार फंसो तो सही, उसके बाद सब कुछ बेचेंगे आपको। इसीलिए तो फटाफट डोमेन मिल जाता है और बिक भी जाता है। आप 1000 रुपए पे भी कर देते हो। 1000 रुपए पे करने के बाद अगले साल उसी के 10,000 पे करोगे, और गलती से छूट गया, रिन्यू नहीं किया, तो 70,000 रुपए पे करोगे, 1.5 लाख रुपए पे करोगे। फिर वही आपको अब नाम रात को 12 बजे। मेरा एक डोमेन हुआ था मक्कामदीना.com का, और वो मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्सपायर हो गया, डेट्स निकल गई 1 महीने का, फिर भी लॉगिन रहता है। वो मैं ध्यान ही नहीं था उस डोमेन पे, और बाद में जब मैं परचेस करने गया तो वो समवेयर अराउंड 30-40,000 का था। देख लो, वही वाली बात है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, ठीक है, देन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोस्त। खालिद साहब एग्जाम दे दीजिएगा। आपका नहीं है ना? अच्छा, ओके। राजेश सर, यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम एंड एवरीथिंग। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये एमएडीएस बेसिक का एग्जाम कब देना होता है? ये आप जब बताओगे ना, आपकी क्लास शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ आता है कि ये शीट है, आपको हमें 10 दिन पहले बताना है कि आप एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, अब 17 तारीख के आसपास एग्जाम होगा। अगर सुनील सर आप एग्जाम देना चाहते हो तो दे दो, आप बता दो, आज या कल में बता दो, हमने सिर्फ आपका नाम डालना। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐड कर देता हूं। ठीक है, then thanks a lot everyone. I will satisfy some of my students sitting in I have a question. Yes, please. Sorry. Yes, please. For the Umrah to be an external agent, if you, for example, you sign with a company there in Saudi Arabia, and you have the GDS, you work in the packages that usually we see,
you have to wait for those company to give you a packages for you to resell, or since you have already the GDS, can you just go ahead and book the hotels and Yes, fly you can do it. ticket by your own? There is no need of taking a package, let me tell you. Okay. Irrespective of it is Hajj or it is Umrah, right? If you know how to do it on your own, there is no need to purchase a package from anyone. But when you are dependent on someone for a particular thing, if you are dependent on me for a visa, if I sell you a visa, I would earn 5,000 rupees per visa. Okay? You want only visa. But if I sell you a complete package, I would earn 30,000 rupees. I will never sell you only visa. That is why we are telling you take only visa from Tashir. Don't depend on anyone and do if it is Umrah, there is no need to depend on anyone. There is no need of any registration. Just take IATA, understand, learn GDS. Get hold on GDS. On the basis of GDS of Saudi Arabia, you can book transportation also, you can do hotels also, you can do flights also, everything you can do. Oh, okay. So for the Umrah, you don't need to be affiliated with another travel agency. IATA is required because wherever you would ask, they would ask for the IATA. Right? But otherwise, you can definitely start it. But for Hajj, you have to be partner with those in Saudi No, Arabia, right? not at all. There is no need of that. Okay. Right? अशरफ अल इस्लाम कैसे हो आप? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अशरफुल इज इन सऊदी अरेबिया, राइट? जी 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 जी। कैसा चल रहा है आजकल? इधर चल रहा, अच्छा चल रहा सर, इधर सब कुछ सही है, सब कुछ सही। सर आज कोई एग्जाम है क्या? मैसेज आपका 17 तारीख को है, आपका वो एडवांस वाला है ना? जी जी जी। और सर एक बात पूछना था, जो वीजा के लिए सर बोल रहे हैं, मैं तो इधर हूँ, सऊदी में हूँ, मदीना में हूँ, तो डायरेक्ट वीजा में नुसुक या आप क्यों नहीं भेजते हो वीजा? मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं तो इधर सर नुसुक या आदर्श इसमें वीजा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि सर ये लोग रेट बहुत ज्यादा बोलते हैं, B2B में काम नहीं कर सकता इसके लिए। क्योंकि और आपके मैंने वीडियो में देखा हूँ, वीजा निकालो, आप वीजा का रेट दो, ठीक है? जी सर। मैं इतने पैसे लूंगा और वीजा दूंगा, और आप देखो मैं क्लाइंट्स की लाइन लगाता हूं। मेरा सर इधर B2B सिस्टम वाला जो कस्टमर है ना, इंडिया में या अदर्स कंट्री में है सब, तो ये लोग वीजा मेरे से मांगता है, बोलता है मेरे को वीजा दो, ठीक है, मगर क्या मैं वो नुसुक में या दूसरे सिस्टम में मैं गया था, तो ये लोग जो गवर्नमेंट का रेट है ना, तो वो रेट नहीं दे रहा मेरे को। मैं बोला थोड़ा ज्यादा लेके मेरे को रेट दे, क्योंकि मैं वो दूसरी जगह में सेल कर सकता हूँ, तो वो नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं, इसलिए मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। अभी तक कंपनी रजिस्टर की है? हाँ किया हूँ, अभी किया हूँ, इधर इंडिया में अभी प्रोसेस चल रहा है, हो गया है शायद थोड़ा बहुत। देखो अब मामला सीरियस हो गया, ठीक है जी। अब आ गया कि आप कुछ दे सकते हो, क्लाइंट चाहिए, हम क्लाइंट देंगे, आप काम करोगे, ठीक है? अब बिल्कुल सीरियस जी ठीक है? जी जी। आपकी सऊदी अरेबिया में कंपनी रजिस्टर्ड है? नहीं नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, मैं नहीं भेज पाओगे, इधर नहीं है। ये मजाक करने का काम नहीं है, समझो इस बात को। नहीं सर, रियलिटी में आप सिर्फ घूमते रह जाओगे कि कोई रेट दे दे, रेट दे दे, कोई रेट नहीं देने वाला। नहीं, इधर मेरा सऊदी का जो मेरा दो फ्रेंड है ना, इधर सऊदी का उसका है, ठीक है, ये लोगों का है, मगर वो लोग बोले इंडिया में तुम रजिस्ट्रेशन करो, कंपनी बनाओ, उसके बाद में उसके कहो हमारे पास इंडिया में 500 कंपनी, आप वीजा का रेट तो दो। आप नुसूक नहीं दे, जो सुनो मेरी बात, जो नुसूक का टूरिस्ट वीजा का रेट है सऊदी अरेबिया का, उससे 2000 कम का रेट दे दो, आप क्लाइंट गिनते गिनते थक जाओगे। ठीक कह रहा हूं सुनील सर? जी सर, जी सर। सर मेरा काम तो थोड़ा डिफरेंट, लेकिन अभी ये जो नया सिस्टम आया है इसके वजह से मेरे काम पे तो काफी इफेक्ट भी होने वाला है। हाँ लेकिन वीजा के लिए मेरा मतलब
काफी उम्रा सर्विस प्रोवाइडर्स है जिनसे डायरेक्ट कनेक्शंस है, मैं चेक करता हूँ किसके क्या बेटर रेट्स है, अगर वो कुछ बेटर डील दे सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज है सबसे उम्रा बड़ी दिक्कत मालूम क्या है उम्रा के वीजा के अंदर? कोई भी एक फिक्स रेट देता ही नहीं है, रखता ही नहीं है। जहां आप उसको थोड़ा बिजनेस दे दो वो तंग करना शुरू कर देता। नहीं अब नहीं मिल रहा, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं सर, मेरे जितने भी है वो फिक्स्ड वाले ही है, बिकॉज ये डायरेक्ट जो भी है उम्रा इश्योरेंस कंपनीज है जिनसे बाकी एक्सटर्नल एजेंट्स जो कनेक्शंस करते हैं, जैसे ये umrah.me.com होगी, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम अभी मुझे याद नहीं है, और भी जितने भी लिस्टेड है नुसुक में, उसमें से बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ डायरेक्ट कनेक्शंस है, डायरेक्ट टाई अप है। मेरे एक कंपनी में तो मेरा खुद का पर्सन बैठता है, वहीं से वो इशू वीजाज इशू करता है, लेकिन वो बांग्लादेश के लिए करता है। मैंने कभी वीजाज पे इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा होटल का काम है तो मैं सिर्फ होटल पे ही करते रहता हूँ। लेकिन अभी इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम लेके आया तो मेरा होटल का काम भी बंद हो गया है। चल रहा है, ओनली टूरिस्ट वीजाज के कंट्रीज है उन पे चल रहा है, बाकी उम्रा वीजाज की जितनी कंट्रीज है उनसे सारा काम बंद है। कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग यू वांट टू सेल यू हैव टू गिव अ कंप्लीट सॉल्यूशन। राइट। हाँ जी ये लो, ये प्राइस है, मैं देने को तैयार हूं, आप लेने को तैयार। क्लाइंट्स की कमी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो टिकटें बेचना चाहते हैं। आप प्रॉपरली टिकट बेचने लायक हो जाओ, क्लाइंट्स की कमी नहीं होने देंगे हम। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के टेस्टिमोनियल्स वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, जो बोलते हैं कि हाँ कि जितना का तो हमने कोर्स नहीं किया उससे तो कितने ज्यादा हमने कमा लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइंट्स विच वी प्रोवाइडेड दैम। किसी से वीडियो टेस्टिमोनियल लेना इतना मुश्किल काम होता है, सीखने के बाद या सारे 100% सेटिस्फाई होने के बाद भी लोग नहीं दे पाते हैं, फिर भी हैं हमारे पास। आपसे कहेंगे ना अशरफुल साहब आइटा आ गया, अपना टेस्टिमोनियल दे दो, आप कहोगे मैं दूंगा, मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ कंक्लूड करते हैं, अगर और कोई सवाल नहीं है तो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।